This is NextGen Innovators from Bihar. We have two boys, two gentlemen and a lady. Sandip Kumar, see I said gentleman and we have a prince here. Sandip Kumar and Prince Kumar along with Arna. Okay, so the boys have come from Daulatchak from Bihar. Okay, and madam is from BGS School. BGS National Public School, Bangalore. Arna? Okay. Please go on. So the mentors here are Santosh Kumar and Smita Brajesh. आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरी तरफ से भी आप सभी को नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। हमारा ग्रुप का नाम नेक्स्ट जेन इनोवेटर है। हमारा टॉपिक है मशीनों के लिए। हमारा टॉपिक है एमएल तथा एआई का उपयोग कर किसानों को कैसे मदद कर सकते हैं। हम बिहार के एक वैसे गांव से हैं जहां खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि हम में से अधिकांश के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। हालांकि हमारे किसानों को अप्रत्याशित मौसम, कीट संक्रमण और आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल संदीप, तो क्या हम तकनीकी विकास का उपयोग कर सकते हैं? हमारा मानना है कि मशीन लर्निंग हमारे किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। आप देखिए, मशीन का उपयोग कर सकते हैं जो मौसम का सटीक अनुमान लगा सकता है। इसका मतलब है कि किसानों को अप्रत्याशित बारिश या सूखे के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए बुआई और कटाई का बेहतर योजना बना सकते हैं। तो आइए पहले समझें कि मशीन लर्निंग क्या है। यह एक कंप्यूटर विज्ञान का हिस्सा है जो कंप्यूटर की तरह डेटा से सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक बच्चे को फलों को पहचानना सिखाने की कल्पना करें। आप उन्हें कई बार अलग अलग फल दिखाते हैं और अंततः वह बच्चा फलों का पहचान करना सीख जाता है। बिल्कुल इसी तरह मशीन लर्निंग में हम एक मॉडल जो एक सॉफ्टवेयर है उसको फलों की कई तस्वीरें दिखाते हैं और मॉडल को बताते हैं कि यह कौन सा फल है। फिर एक बच्चे की तरह वो फलों की पहचान करना सीखता है। इसलिए कंप्यूटर बहुत सारे डेटा से सीखते हैं। वे कर सकते हैं पिछले मौसम के आंकड़ों का अध्ययन करके मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करना सीखे या फसलों की कई तस्वीरें दिखाकर वह बीमारियों को पहचाने। ये सही है संदीप, मॉडल और कुछ नहीं बल्कि कई पैरामीटर है जो बहुत सारी संख्याएं जिन्हें कंप्यूटर द्वारा बदल दिया जाता है। जब कंप्यूटर पर्याप्त सीख लेता है तो यह भविष्यवाणी और निर्णय लेना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे हम सब निर्णय लेते हैं। यही है जिसका उपयोग हम अपने किसानों के लिए करना चाहते हैं। आइए भारत में किसानों की बात करें। उन्हें अप्रत्याशित मौसम, कीटों के हमले जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम मशीन लर्निंग के साथ उन्हें समय पर सलाह देने के लिए मौसम के पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, फसल स्वास्थ्य जैसे डेटा का हम विश्लेषण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले मौसम के आंकड़ों का विश्लेषण करके मशीन लर्निंग या भविष्यवाणी कर सकते हैं कब बारिश होगी, जिससे किसान अपने फसल बोने और काटने का अच्छा समय तय कर पाएंगे। और यह सिर्फ मौसम के बारे में नहीं बताता है, यह फसलों का विश्लेषण करके मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करता है और इससे यह पता चलता है कि किसानों को वह फसलों की तुरंत कार्रवाई कर सकता है। वह जैसे कि वो कीटों के हमले और जैसे अप्रत्याशित बारिश आ जाता है वह विश्लेषण करके किसानों को बताएगा। इसका यह मतलब है कि किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए वह तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मशीन लर्निंग किसानों को बाजार के रुझानों को भी समझने में मदद कर सकती है ताकि वे जान सके कि कौन सी फसल अच्छी कीमत पर बिकेगी, जिससे कि किसान उस फसल को बोकर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो हमारा प्रोजेक्ट एक विकसित कर रहा है जो इस शक्तिशाली तकनीक को सरल और उपयोगी तरीके से हमारे किसानों तक पहुंचाएगा। हमारा मानना यह खेती में क्रांति ला सकता है और हमारे ग्रामीण समुदाय के जीवन में सुधार ला सकता है। हम बाढ़, चैट जीपीटी, किसान जीपीटी तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में किसान को जागरूकता फैलाने का प्रयास करें। साथ ही साथ उनको इन उपकरणों का के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षित भी करेंगे। और हम लोगों का सपना है कि अपने किसानों को प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाना तथा खेती को अधिक पूर्वानुमानित और लाभदायक बनाएं। अब हमारे सदस्य मेंबर आरना जो आप सभी को बताएगी कि
मशीन लर्निंग तथा एआई का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद Sandeep. Namaste everyone. I am Arna Sarker. Just as Prince and Sandip have explained us how AI and ML works and how it has helped out in the agriculture sector, it is now see on how it has impacted the healthcare sector of our country. Technology has helped in advancing the healthcare industry a lot. Today, patients have access to some of the best and cutting-edge treatments in the world. Technology has made healthcare services accessible to everyone, far and wide, using the remote consultation for doctors, which are of quick and quality experiences. But these technologies have an adverse effect too. Like they can be a job replacement strain in the healthcare industry, be a loss of human care, human touch in patient care, and the legal and ethical uncertainties will persist. But regardless of these uncertainties, they have significantly impacted the healthcare industry. Let us see on what are the conveniences they provide us. The conveniences they provide us are diagnostic accuracy, predictive analysis, personalized medicine, building accuracy, and drug discovery too. For now, let's focus on the ones which have significantly impacted the rural ends of our country. Firstly, diagnostic accuracy. We see in the healthcare industry that often inexperienced doctors with the wrong diagnosis, leading to the wrong treatment, delayed treatment, or no treatment at all. But we can stop this with the help of AI and ML. Diagnostic accuracy in the terms of healthcare with the help of AI and ML refers to the diagnostic test or algorithm, which will help in identifying as well as excluding a particular disease or condition from the patient. This is a measure of how well the diagnostic tool performs in the terms of specificity as well as sensitivity. Moving on to the next one, which is operational efficiency. Operational efficiency is where we have examples such as we see patients getting neglected just because the doctors have a lot of work pressure to complete the paperwork than providing the patient care. But our wonderful AI and ML engineers have a solution to this, which is operational efficiency. Operational efficiency refers to the optimization of processes as well as resources to enhance the overall healthcare performance as well as the delivery of the healthcare services. This will help the doctors in providing much more patient care than focusing on the paperwork. Moving on to the last one, which is the remote monitoring and telehealth. We have seen cases in the rural ends before the COVID-19 that the patients have deteriorated in their medical condition just because of the lack of doctors or monitoring devices. Though the situation has improved after the pandemic, there are cases which continue to be so, just because there's not the right technology in the remote villages. But here's where remote monitoring and telehealth comes in. Remote monitoring and telehealth refers to technology which will help connecting the healthcare professionals from the urban area to the villagers in the rural area so that they can monitor as well as provide care to them even from a distance. This will help in improving the patient outcomes, effectiveness of healthcare delivery, as well as the accessibility of medical services. After the research we have done, we have an idea. That is, we would like to set up medical units in the remote places where there would be an AI model as well as a medically trained professional, where the AI model will be trained with the common symptoms of a given diseases. As the villages approach the medical unit, they will tell their symptoms, which will be fed by the medical technician into the AI model, which will provide us with a much more accurate diagnosis. This can be done with the help of sophisticated AI and ML tools. This will help the villagers in reducing the amount of distance they cover just for minute medical conditions. In conclusion, AI and ML is a transformative leap towards much more personalized, effective, and accessible medical service. Technology advances, the synergy between AI, ML, and healthcare holds the promise of revolutionizing how we approach medical diagnosis, treatment, and patient care, ultimately fostering a much more healthier as well as connected global community. Dhanyavad. Hello, everyone. Can we go with some questions? Yeah, sure. They just have a deck which is showing. Just Okay. allow Sure. a minute and then we'll go for this.
So firstly, Arna, Sandip and Prince, that was very nice, listening about AI ML from you. You brought in so much conviction. It's so nice to see that, at your early age, you have so much of know-how and knowledge, and you picked up two very critical industry, okay, healthcare and agriculture. I was going through your deck too. This is an outcome of your research is what I would believe. Is that a right assumption? I mean, you did study and put this together. Did you get to see, like, I did see the healthcare, you have done a thorough study and you've really come up with many things. While in agriculture, of course, you have thrown some light. Any of these industries, pick and choose, okay? Anything that you've seen as an example where things are happening really great, and as an example where you think there's a scope of improvement during your research, or more pertinent to maybe the areas where you have been studying within the country or beyond, wherever you have done your research? You followed my question, or should I explain? I would like to elaborate on it, please. It was not quite clear to me. Okay, let me make it very simple for you. So you've done a lot of research, you've come up with theoretical, viewpoints as to what you studied, okay? While you did your research, did you figure out from cases on the ground, okay? Any one, okay, where you saw that this is giving a stupendous result, very objectively, or, okay, and I'm making it a choice, an area where you saw that, people are working with AI/ML in healthcare or in agriculture, but possibly there are few scope of improvement when it comes to the technology aspect of it. Okay. I would like to go with the first question. As you told, if I have an example or not. For the time being, what I have seen, or according to my research, is that there are places which they are trying to implement. It hasn't been implemented till date. But there are apps like Symptomate, AI Care, AI Doctor, and all, where you can, actually type in the symptoms as I've described in the solution as I've presented, where it would be helping us in diagnosing this, the ill health, in giving a much more accurate diagnosis to the patient and a much more straightforward solution to the disease, or providing it a particular, if a disease is very acute or not. Let me give an example of how it works in the case of Symptomate. Symptomate example, I have a stomachache. First, I'll be entering that as my first symptom. The Symptomate app will be reversing me back with a few set of questions, which will be like, how acute is the stomach pain? What have I eaten in the past few hours? And has there been other symptoms other than stomach pain? Regarding concluding from my symptoms, it will give an analyzed form of answer, where it will provide me that if I have to go to a doctor or not, and what are the medicines which can help me out in such a situation. Okay, good to hear. I think, I'll not stretch it, but it would be very important also to understand how some of these products that you have studied, are getting adopted in various markets, especially in our country and some of the, corners of the country. If these elements are added to your researches, that would also kind of throw some light as a path ahead, how it should look like. So that's just a suggestion as you kind of keep working on this, because this is a technology for tomorrow and you are studying it today. So it's very wonderful. Thank you. So I think that was from my side. Thank you, Sonali. आपने जो ML AI ML के बारे में बताया, इस प्रोजेक्ट के लिए सीखा आपने, उससे पहले आपको पता था? नहीं, पता नहीं. इस प्रोजेक्ट के लिए सीखा आपने? Yes. Very good. Have you seen somewhere it's getting implemented in and around your village? अपने गांव में कि जो एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहे थे, या वो उपयोग किया गया है आपके गांव में? जिस गांव में हम सब रहते हैं वो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इसका AI का उपयोग उस गांव में हो सके. हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे चलकर इसका उपयोग हो उस गांव में. हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि हम सब के जो माता पिता जो हमारे गांव के हैं, उनके माता पिता उतना तो एजुकेशनल नहीं, लेकिन हम उनका जो बेटा है या फिर उनका जो कोई एजुकेशनल, हम उनको बताते हैं ये कैसे उपयोग करते हैं, इससे क्या लाभदायक होता है, आप फसलों को किस प्रकार अच्छा से कर सकते हैं.
आपने ये बहुत अच्छे से समझाया है। क्या आप गाँव में जाकर स्टेज के ऊपर जाकर ये समझाना चाहोगे कि करे आपने? हम सब काफी अच्छे से समझाया, ये पता चल रहा है कि तुमने भी समझा अच्छे से, उसके बाद समझाया भी अच्छे से। ये पहले जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, पहले उस स्कूल के बच्चे को समझा, फिर ये कितने बच्चे को समझाएंगे? करीब लगता है 50 बच्चा होगा। 50 बच्चे, सब लोग सुन रहे थे? ये और जो मौसम के खराब होने के कारण इसमें हमारे स्कूल में हॉलीडे हो गया था। एक और जो स्कूल में हम रहते हैं, वहाँ पे जो हॉस्टल है, सबको बच्चा भी हमने एकत्र किया, और संतोष सर थे, वो भी मतलब वो बोले हम वीडियो, मतलब मेरे भाई है, सर का जो बेटा वो मेरे भाई है, तो वो वीडियो बना रहे थे और हम बच्चों को बता रहे थे कि AI/ML का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्या आपको इंटरेस्ट हो गया भी AI/ML में? पूरा आपको पता है ये सबसे मोस्ट वांटेड जॉब अभी AI/ML में ही है। अगर आपको पसंद है तो बाद में इंजीनियरिंग करना चाहोगे तो आप अभी से अप्लाई कर सकते हो, आपकी नौकरी तो पक्की हो गई। आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल हटा रहे हैं, AI/ML ला रहे हैं। तो आप सही रास्ते पर। मुझे बचपन से ही मशीनों से प्यार है, अभी भी स्क्रू ड्राइवर पॉकेट में लेके घूमते हैं। अभी है शिक्षा में राइट साइड है तो निकलवा तो लेके आ। बहुत अच्छा, keep it up, अगर keep learning about AI/ML, अगर हमको कोई मतलब फंड या फिर जो होगा, मतलब हमें ऐसे तो हम ग्रामीण शहर है, वहां तक पहुंचना तो हमारे बस का नहीं है, लेकिन आप सबकी कोई मदद या फिर कोई फंड दे या फिर हमको आगे बढ़ने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा क्लास में करते हैं? 8th standard। Very nice, good show. Any more interactions from the Hindi side, or can we let them go? No, thank you from my side. All right. Okay. May I just add in one thing? Yeah, sure, please. Yeah, the example I had given about setting up medical units in remote villages, that was a basic example of what I have thought overall. But as the pandemic had started, that's when another idea had popped up in my mind. That is, when we all have barcodes for each of our, where we stay. For example, 5609 is example where I stay. He stays in 56007. All they're related or they're nearby. Now I have a symptom of a severe cough, fever, and cold. So I appear and I have tested positive for COVID-19. Now this is where, if he also seems to have come up and multiple other people from the same locality or the same area come up with the same system, same symptoms, the AI will be having the ability to judge and accordingly see if there are so many common symptoms, there must be an outbreak in that area, which means we must isolate that and they must be quarantined. This is where during COVID-19 is what I have thought of. Wonderful. Thanks for sharing. Very innovative. Thank you. Thank you. Thank you. Avantika, you had raised your hand. Do you have a question or do you need to say something? Yes, I would like to add something. I think it was really a well put presentation, and there was a lot that you guys have researched, which is really great. I would like to know what would be your next step as to what you want to do with the prototype. How do you plan to go ahead with it? And whether you think it's going to be better to narrow down, in between agriculture or healthcare, so that you can focus on one aspect. आप जो आप काम कर रहे हैं ना, हम लोग AI और ML के बारे में एग्रीकल्चर हेल्थ केयर में, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोग गांव में जाकर ये इम्प्लीमेंट करोगे, आप दोगे किसानों को या समझाओगे, पहले क्या है आपको? पहले मैं तो इस पर गांव के वाले को समझाऊंगा कि आप इसका यूज कीजिए, आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको, और अपने फसल को कितने बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं और कितना लाभ कमा सकते हैं, जिससे कि अगर उन्हें कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि अपना एक ऐप विकसित करें, जिससे कि वह किसान उसके द्वारा अपने जो भी सहायक हो, जैसे अचानक बारिश आ जाती है उसका पता, एग्रीकल्चर में जो किसान होते हैं
उनको बहुत सारे कीटाणु या जीवाणु के बारे में पता नहीं होती, जिसके लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो गांव में उतना एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं होते, इसके लिए हम लोग ऐप विकसित करना चाहते हैं। और इसके लिए हम लोगों को, जैसा कि मेरा दोस्त संदीप ने बताया, आप सभी को कि आप सभी की सहायता चाहिए। इसके लिए बहुत सारे पैसे, लाखों करोड़ों रुपया पैसा की आवश्यकता होती है, और हम लोगों के पास उतना अवेलेबल नहीं है कि ऐप विकसित कर सकें। Like for instance, Sandeep has told that we need funding in the terms of healthcare. I know that AI and ML will have a proper infrastructure in the remote villages and will be developed, and it won't remain as a remote village, but that will take a few more years to do it. Just before that, like I told, medical units, or let's make the awareness between the villagers or the people who live in the remote areas about there are apps which exist now which are in service and which can help you out so that you don't have to travel to long distances just, for maybe a small stomachache or something. Thank you so much. Thank you.